Good morning all, I am Alok Sethi and today I welcome you all to this Excel learning session on three important and basic advanced Excel skills, that is data validation, pivot tables and macros. So I welcome you all here and there are few participants who are joining in. So we'll just wait for 1 or 2 minutes and then we'll start the session so that maximum people can take benefit from it. Meantime, what I'm doing is I'm sharing a link to our WhatsApp group for Excel learners. So you can join that group. There is a Google form attached to it, so you need to just fill that form and you'll get the link. So by the time people are joining in, just do this activity. It will take 1 minute and then we'll start with the session. And I request everyone to be ready with the notepad, writing pad and a pen so that you can note down the important functions and formulas. And we will be sharing the recording of this session with all the participants. So you fill in the form so that we get your details and we can send you the recording so that you can review it again and you can practice with the practice sheets also. We'll be sending the sheets also. So in the chat box, you can see that I've shared a link. I request everyone to just fill up this Google form and in a minute or so, we'll start with the session. I've shared my screen. I hope it is visible to you all. Since it is a virtual session, so in all my sessions, I request all the participants to be active in the chat box and keep interacting with me so that I know that you are all with me. It's a Sunday morning and people have turned up. That shows that you are eager to learn Excel and use it in the most productive way at your workplace. And definitely after this session, you will be getting to know many Excel tricks which you might not have known or used at your work. So I hope the screen is visible to you all. Can we have a yes in the chat box? Yes. Okay. Thank you, Akhil. So now I'm going to start with the first tool that we are going to use, that is data validation. Now, what is data validation? Okay, let me just ask you, have you ever used these three tools? Just reply with a yes or no if you have used these tools earlier at your workplace while you have used Excel. क्या आपने कभी data validation, pivot tables या macros use किया है? No. Okay. Akhil says no. Who else have not used this before? The question is, have you used these functions of Excel before while you were working with Excel, or this is the first time that you are going to learn? So Hemant ji also says no. Okay. So that is why you are here up at 9 a.m. on a Sunday morning. It was so difficult, but yes, learning makes it possible when you are thorough and you know that what is the importance of what I'm doing. So you prioritize what is important to you and then accordingly you start your journey. So without taking much time, people will participate, will join in. We start our session and we start with the first technique, that is data validation. Now, before I start with data validation, on the screen, you can see that whenever you open an Excel, you see the grid lines in the background. But here you are seeing a blank white background. So I'm opening a new Excel, or let me just insert a new sheet, and you will see that this sheet has a grid lines. You can see that grid lines are there.
and I'm just typing my name over here. So you can see that these are grid lines which are appearing. Now, in my other sheets which I've already created, you will not see any grid lines. Okay. So first thing is that how do we remove these grid lines, or how can we just switch off these grid lines so that our sheet is blank or it is like pure white? So what you have to do is you have to go to the view menu. You have to select this view tab. These are called as tab. And when you click on a tab, जब भी आप कोई tab पे click करते हैं तो उसके नीचे जो open होता है that is called as a ribbon. So view में जाएंगे, ribbon में there is a feature known as shown. And when you click on show, you will get three options. I'm using Excel 365, which is the latest version of Excel. You might be using some different version of Excel like Excel 2007, 10, 13, 16 or 19. तो आपको हो सकता है कि आपके टास्क बार में व्यू में बाहर ही दिख जाए, और जब आप इसको अनचेक करते हैं ग्रिड लाइंस को, so you see that the grid lines disappear, and when you want to check it again, you will see that the grid lines appear. And when you take a printout, so these grid lines do not get printed. When you see the print preview, it will show you a blank screen only. It is just for your working, for the ease of understanding the rows and columns and the address, cell address, the grid lines are made. Okay. So first thing was about grid lines. Now, when you see, when I'm moving this cursor to data validation, pivot tables and macros, you will see that the icon of the cursor is changing to a hand symbol. Put this pussy in your mouth. Dick about to grow like a motherfucking sprout. Come and eat the. If you want to ask any question, if you have any doubt, you can use the chat box. But I would request everyone. Pirate, cause that nigga stole my box, about to suck on his dick till my jaws get locked. If you wanna fuck, you got this in my spot. Set his penis till he shoot a cum shot, then I drink up his kids like a. Come to my spot. He about to aim it at my ass, no swap. I'm about to kiss some DNA, get swapped. I'm a bad bitch with good twat. Okay, so I'm very particular about this thing. If someone is creating any nuisance or not following the guidelines, I'll remove that person. So the one person was constantly playing on the music, I have immediately removed that person, because our everyone time is important. I'm a professional giving time to you, so for learning. So if someone wants to just create a mockery or like something like that, better not to join this. It is only for pure learners. So I let me just excuse me for that. And now again we are back to what I was telling you. When you move across this sheet, you will see that the icon of the cursor is moving, is changing when I'm moving this across the screen. तो जब मैं data validation पे जा रहा हूँ तो it is turning into a hand signal, and when I click on it, it takes me to another sheet that you can see is a data validation sheet which I have created for you all. And you can see that icon over here, Excel vibes. When I click, when I'm moving this across, it is not converting, it is not changing to a hand symbol. But when I'm taking it here, it is converting it into a hand symbol. ये मेरा icon change हो गया है. Okay. I hope everyone is comfortable with English, or should I use English and the mix? Can we have, are you all comfortable with English? No. Okay. Both. Fine. Okay. So I'll use a mix of both Hindi and English both, so that everyone learns. So जब भी आप देखेंगे कि हम कर्सर मूव कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी अगर कोई हाइपरलिंक इंसर्टेड नहीं है, वहां पर ये कर्सर नॉर्मल कर्सर रहेगा, और जहाँ पे भी कोई हाइपरलिंक है, दैट मींस देयर आर शीट्स व्हिच आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से शीट्स जुड़ी हुई हैं. हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमें बेसिक शीट पे ले आया, मास्टर शीट पे ले आया, और मैं जहां से, जैसे सपोज आई क्लिक ऑन मैक्रोस, सो इट विल टेक मी टू अनदर शीट. नाउ हाउ टू डू दैट? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं. इट कैन रियली क्रिएट अ गुड वर्किंग environment for you all, and it can ease your work.
ठीक है, तो कैसे करना है, सपोज आई वांट कि मैं इस आइकन, इस इमेज पे क्लिक करूं और ये मुझे शीट 7 पे ले जाए जो मैंने नहीं इंसर्ट करी। तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक ऑन इट and it will give you an option link. Okay, you can see a link is there and you click on this link and it asks you to insert hyperlink. Okay, and then it gives you option text to display. Okay, if you want to display any text, it's okay. If you don't want to display, then type the cell reference and it gives you three options where you want to place this link at: existing file or web page, place in this document, or email address. So I want to place in this document only. So if I select existing file or web page, I can connect any Excel file or any file for that matter और वो वहां ले जाएगा। अगर मैं इसी शीट में कोई और शीट पे जाना चाहता हूँ वर्कबुक की, तो I can select that sheet and I can just press OK. Fine. So now you see that when I've inserted the hyperlink, now this has image is showing a hand symbol, and when I click on it, it is taking me to sheet 7. अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आलोक सिटी पे क्लिक करूं, it takes me back to the master sheet. So again, what you have to do is you have to right click, go to insert, go to link, and then click insert link. And again, you want to go to the master sheet. आप master sheet पे जाना चाहते हैं, master sheet select करें और OK press करें. Now you will see a difference. जैसे ही मैंने hyperlink create किया है, जो भी हमने टाइप किया था, जो नेम टाइप किया था, उसका फॉन्ट कलर चेंज हो गया है और उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई। ठीक है, दिस वी हैव नॉट डन, बट हाइपरलिंक क्रिएट करते से ही हो जाता है। और व्हेन यू जस्ट ओवर योर माउस ओवर इट, जैसे आप इसके ऊपर आते हैं, इट शोज यू द एड्रेस वेयर इट विल टेक यू। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स में बियॉन्ड एक्सेल फाइल से डे 3 एक्सेल वेब वाइब्स के नाम से, एंड देन मास्टर शीट A1। तो व्हेन आई क्लिक हियर, इट टेक्स मी टू द मास्टर शीट। ये मुझे मास्टर शीट में ले गया है। So I am just removing this Bob also. Many just people, unwanted people are there in the group. Just give me one moment, please. So this happens when you I usually share it on my social media platforms so that maximum people can participate, but we get some social anti-social elements also. Anyways, so now we start with data validation. आपको, I hope everyone is through with hyperlink, inserting a link. Can we have a yes in the chat box? Okay, thank you. Okay. Now I'm taking you to the data validation. Now, what is the role of data validation? See, at times we need to input some data. या हम कोई sheet बनाते हैं, master बनाते हैं. Excel is not only for professional, but anyone who wants to record any data, who want to analyze any data, and who want to work with data. तो चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, एक्सेल सभी के लिए है। और बस हमें ये आना चाहिए कि हम एक्सेल को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर नीड्स। तो आई वांट टू गेट सम डेटा एंड आई वांट टू चेक दैट जिस फॉर्मेट में मैं डेटा चाहता हूँ, इनपुट यूजर उसी फॉर्मेट में उसको इनपुट करे। सो आई वांट कि व्हेनेवर आई समवन इज इंसर्टिंग नेम ऑफ क्लाइंट, सपोज माय एम्प्लॉय, आई आस्क्ड माय एम्प्लॉय टू फिल दिस, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ नाम आए, नंबर ना आए। So if I put number over here, it is allowing me to put a number. In mobile number, if I put my name, it is allowing me to put my name. Now I want कि when I insert PAN number should be 10-digit PAN number. Okay. So if I put so many digit, it is allowing me. Aadhaar number 12 digit का होता है. If I put more than that, it is allowing me. So how we can put a check on this data? How we can validate that जो data हम चाह रहे हैं, जिस format में हम चाह रहे हैं, उसी format में वो data insert.
उसी के लिए वी यूज डेटा वैलिडेशन. Okay, so I'll tell you the shortcut key. I'm just typing in the shortcut key of switching on the data validation, and I'll show you where you will find that option. Now see, learning Excel is an art, but when you are using Excel, you should know how to use the shortcut keys so that your task become very easy and becomes time saving. तो डेटा वैलिडेट करना है तो ऑब्वियसली आप डेटा टैब में जाएंगे. डेटा टैब में यू गेट दीज ऑप्शंस. तो यहाँ पे डेटा टूल्स जहाँ आता है, डेटा टूल्स, वहाँ पे यू गेट दिस ऑप्शन where a tick mark is there and a stop button is there, and you click here, it shows you data validation. Now before going to understand the practical, let us understand what it does. Pick from a list of rules to limit the type of data that can be entered in a cell. For example, you can provide a list of values like 1, 2, 3, or allow numbers greater than 1000 as valid entries. Now, I'll show you how you can restrict the name of client to have only alphabets and not number. हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स आए, नंबर नहीं आए. तो हम डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे. डेटा वैलिडेशन डेटा टैब में आपको डेटा टूल्स के अंदर मिलेगा. ठीक है, बट देयर इज अ शॉर्टकट की विच इज ऑल्ट DL. तो आपको करना क्या है, जहां पे भी आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है उस सेल में आप आएंगे, उस एक्टिव सेल में आप आएंगे और वहां पे आप ऑल्ट D और L प्रेस करेंगे. ठीक है. नाउ when you press alt and you stop, what happens is it gives you all the options, all the shortcut keys which are available. तो आपको कोई भी शॉर्टकट याद कैसे रखना है, ऑल्ट की प्रेस करें और देखें कि कौन से टैब में हमको फंक्शन यूज करना है. सो आई वांट टू यूज द डेटा टैब. डेटा टैब के नीचे आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है. सो व्हेन यू प्रेस ए नेक्स्ट एंड सी व्हाट हैपेंस. जैसे ही आपने ए प्रेस करा, डेटा टैब का रिबन ओपन हो गया. नाउ रिबन में आई वांट टू गो टू डेटा टूल्स. डेटा टूल्स में आप जाते हैं तो वहां पे देखिए वी दिख रहा है, बट मैंने आपको एल बताया था. सो आई प्रेस वी फर्स्ट and it is giving me different options. Again data validation में V दिखा रहा है. So when you go through the route, ठीक है, तो आपको लंबा जाना पड़ेगा. But when you want to use the shortcut keys, you can. Okay, I'm lost. Please repeat. Fine. So I'm repeating it again. First, you need to press the Alt key. Okay. All the shortcuts in Excel begin with Alt or Control or Shift key. So these are the three main pillars of Excel. ठीक है, जैसे अमर अकबर एंथोनी है मूवी के अंदर, वैसे ये हमारे एक्सेल के अमर अकबर एंथोनी है, ऑल्ट शिफ्ट एंड कंट्रोल. तो हमने ऑल्ट की प्रेस किया है तो आप देखें कि सारा जो हाईलाइट है, जो मेन्यू है डेटा टैब का, वो सब हाईलाइट हो गया अल्फाबेट्स. सो डेटा टैब के नीचे जहाँ पे मेरा माउस है, कर्सर है, उसके नीचे ए अल्फाबेट दिख रहा है. आई एम प्रेसिंग ए. सो व्हेन यू प्रेस ए, देयर इज अ रिबन व्हिच कम्स अप, और इस रिबन में आपको बहुत सारे अल्फाबेट दिख रहे हैं विच विद ब्लैक बैकग्राउंड. बट हमें फोकस क्या करना है, हमें डेटा टूल्स पे फोकस करना है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज सेक्शंस. ये रिबन के अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं. हम इस सेक्शन की बात करें जो डेटा टूल है. डेटा टूल में आप वी पे जाएंगे तो डेटा वैलिडेशन देखेगा. अगेन यू प्रेस वी, सो अ थिंग्स पॉप्स अप. ये कुछ खुला है, उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स. ठीक है, बिकॉज यू कैन डू अ डायलॉग, आप इससे बातचीत कर सकते हैं. ठीक है, Excel is one such program where you can add. How to get shortcut of any command in Excel. Okay, so for shortcuts you have to check out the shortcut keys. There is a list available. I'll put it in the group so you will get that. But shortcut के लिए आपको Excel में अगर देखना है तो you can just press F1. Okay, I'm just pressing it because this question has come up. So when you press the F1, it opens the help menu. So if you don't know anything and you want to ask Excel, you don't have to go to Google. आपको Google पे जाने की जरूरत नहीं है. Excel के अंदर ही इनबिल्ट फीचर हेल्प का, जो आपकी हेल्प के लिए रेडी रहता है. ठीक है, और हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं डेटा वैलिडेशन and you just press enter.
So it will give you all the options. देखिए, select the cells that you should have the drop down, go to data and select data validation. ठीक है, और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं टेक मी देयर, तो वो आपको वहाँ पे लेके भी जाएगा. So you can see that Excel is actually doing it itself. ये Excel 365 का कमाल है. ठीक है, so whenever you are using any software, it is always recommended to use the latest version. ठीक है. Okay, so now what you have to do is, fine. So what you have to do is, now you have to go to validation. तो आप यहाँ पे validate कराना चाहते हैं, तो custom में जाएंगे हम, and we want to have only text. So is equals to, and then you write text, and you select is text. Okay, you want to check whether what the user is inputting is only text and not number. वो text होना चाहिए, number नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक validation लगाया. अब let me just put number over here, and it is giving me an error. This value does not match the data validation restrictions defined for this cell. So you are restricting the user from putting any number. ठीक है, अब हम नीचे जाके और अब यहाँ पे हम नंबर वापस टाइप करते हैं, तो देखिए नंबर यहाँ पे ले लिया क्योंकि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन नहीं लगा. तो अब क्या करें, इसी सेल को अगर मैं कॉपी करके और नीचे तक पेस्ट करता हूँ, एंड if I try to put number over here, it will stop me from doing this. ठीक है, क्योंकि we have copied the validation, data validation जो है हमने कॉपी कर लिया. अब आप यहाँ पे नाम लिखें, it is allowing me to put so you can see that you have validated कि यहाँ पे नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ नाम ही आएगा. Now I hope it is clear. Can we have a yes? I hope the pace is also okay. अगर आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट या धीरे करना है, तो you can just reply in the chat box. I'll just change my pace accordingly. Okay, fine. Now mobile number. So second validation we have to put is at column C. तो आप क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम में अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप कॉलम को सेलेक्ट कर लें. Again you press Alt D and L. Again this window comes up, this menu, this dialog box is there, और आपको सेटिंग्स में अलाउ, क्या चीज अलाउ करना है. अब यहाँ पे हम कस्टम, देयर इज ऑलरेडी सो मेनी ऑप्शंस ओवर देयर. ठीक है, अगर आप होल नंबर कर दे तो नंबर अलाउ करेगा, डेसिमल लिस्ट, टेक्स्ट लेंथ कितने डिजिट का होना चाहिए. सो सपोज आई यूज टेक्स्ट लेंथ ओवर हियर एंड आई से डेटा इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, मोबाइल नंबर इज 10 डिजिट ओनली, सो आई वांट टू यूज पुट इट 10. और अब मैं देखिए यहाँ पे नंबर डालता हूँ, आई पुट माय नंबर and it is taking. Now I put a 0 and I put my number. So it has removed the 0. Okay, let me just put a 0 behind. And it is giving me an error. This value does not match the data validation restriction defined for this cell. आपने 10 डिजिट मांगी थी, अब सपोज मैं 4 डिजिट ही मेंशन करता हूँ तो भी मुझे ये नहीं इनपुट करने देगा. तो दैट मींस वी आर वैलिडेटिंग द एरर दैट माइट हैपन. ठीक है, नाउ इफ आई पुट माय नेम, is it allowing me to put my name? Because it is 9 digit, I put my name and I put 9, it is allowing me. क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैलिडेशन चूज किया है वो है टेक्स्ट लेंथ, उसमें हमने नंबर और टेक्स्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया. एक्सेल को नहीं बताया कि आप डिफरेंशिएट करो कि नंबर या टेक्स्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल नॉट यूज दिस टेक्स्ट लेंथ, वी विल यूज अनदर फॉर्मूला. ठीक है, Alt DL. So it is important to know the formulas also in Excel. You go to custom again और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे. हमने नेम को वैलिडेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया था? एनीवन इन द चैट बॉक्स, which formula we use to validate the names?
See, I keep on asking so that everyone gets reminded of, सबको याद आ जाए कि हाँ, क्योंकि many people are attending for the first time. So be active and reply to my queries in the chat box so that I know people are active and awake in the morning. Yes, text. Yes. So यहाँ पे हम यूज करेंगे is number for number. हम चेक करना चाहते हैं कि जो भी इनपुट आ रहा है कॉलम में, सेल में, वो नंबर है कि नहीं है. ठीक है, तो is number and you select that cell and you press OK. ठीक है, and now you see when I put a name, it is not allowing me now. This value does not match the data restriction. Okay, so I put a number over here. This value does not match the data validation restriction क्योंकि यहाँ पे digits भी ये count कर रहे हैं. ठीक है, all DL पे जाएंगे हम वापस and is number हमने रखा है. ठीक है, and यहाँ पे आप इसको OK कर दें. Now if I write over name here, it will not allow. So it will only allow me to put numbers only. Okay. Now one announcement I want to make that this meeting will end in next 3 minutes because my this plan got expired today only. So I'm just posting the link to join again. So if you get removed from this meeting, join again in the same link. Okay. So the link you copy it somewhere और आप इसी लिंक पे अपने वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा. चैट बॉक्स में आई हैव गिवन यू द लिंक. So if this meeting ends, you just join it again with the same link. Okay. Now we have seen the validation for mobile number. Now you want to validate the PAN number. So I'm just putting any PAN number over here. Okay. Now this PAN number is not proper. PAN number is a 10-digit number which have some alphabets also and some numbers and then alphabet in the end. ठीक है, अब आपको वैलिडेट कराना है कि 10 डिजिट का पैन नंबर होना चाहिए, उसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों होने चाहिए. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू ऑल DL एंड यू कैन से text length and you can say is equals to 10 and say OK. Okay. So now if any user put any length less than 10, it will not allow. Let me just copy it and apply across. So it is giving me an error. This value does not match with the data validation restriction defined for this cell. ठीक है, अब मैं यहाँ पे 10 डिजिट का पैन नंबर लिखता हूँ. It is allowing me. So you can restrict this with the text length feature. Similarly for other you can do. Now if you want to take date of birth, ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ डेट इंसर्ट कराना चाहते हैं, ऑल DL पे जाएंगे, any value की जगह you can choose date and you want to have a particular date. So suppose you want people born in the year from the year 80 to 22, in the year 1980 to 22. So you can put that date, you can choose that date. Start date हम चाहते हैं 01/01/1986 and I want to take till 31st December 2000, let's say, and say OK. Okay, and we can just copy it, we can just drag it down and this data validation will get copied and I put a date of birth which is beyond our limit. This value does not match with the data validation. Now ये जो मैसेज आ रहा है, आप वहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि जो डेट आप इंसर्ट कर रहे हैं वो 1 जनवरी 86 से लेके 31 दिसंबर 2002 तक होना चाहिए. ठीक है, now this meeting is going to end in next 1 minute. I'm again copying and pasting the link so that everyone can join again. ठीक है, जैसे ही ये क्लोज हो जाए आप इसी लिंक पे वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा.
I'm putting that link again in the chat box. So what you have to do is want a error message, specific error message to appear. तो आप यहाँ पे करेंगे error alert और यहाँ पे you can write down input date between 1/1/1986 and 31st December 2000 and you press OK. Now when I enter 1/1/1985, it will show me what I have to input. Input date between 1/1/86 and 31st December 2000.